Assalamu alaikum. Students, page number 7, the third sense organ, that are ears. This is the picture of your ear, and this outer portion is called the pinna. The pinna is shaped like this so that it can collect the sound waves. Now, this is the internal structure of a human ear. Ear is divided into three parts. This portion is called the outer ear. From here till here it is called middle ear, and then this portion is called the inner ear. Outer ear is called the pinna, which receives the sound waves. Its function is to collect the sound waves, यानी साउंड जो आपको आस-पास आपके जो आवाज़ें आती हैं उन आवाज़ों को कलेक्ट करना, उन आवाज़ को महसूस करना, यानी उनको एयर तक पहुंचाना किसका काम है? कलेक्ट करना आउटर एयर का. देन द साउंड पासिस थ्रू अ कैनाल, एक पैसेज है, एक रास्ता है, एंड एंटर्स इनटू द मिडल एयर. मिडल एयर में यहाँ एक वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है. दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एयर ड्रम. एयर ड्रम जो है it acts as a curtain. When sound waves enters the pinna and passes through the air canal, this is the air canal. When they passes the sound waves after entering into the air canal, they strike the eardrum. Strike means they hit. जब वो ear drum को hit करते हैं तो ये एक पतला सा membranous curtain होता है, और ये curtain जो है वो vibrate करता है. Vibrate means something which moves, मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे मूव करता है, वाइब्रेट करता है, और इस तरह वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं. और आपको मालूम है जब कभी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो आवाज़ सुनाई देती है. फ्रॉम हेयर व्हेन द एयर ड्रम वाइब्रेट्स देयर आर थ्री स्मॉल बोन्स कॉल्ड द हैमर. दिस वन इज़ अ हैमर शेप्ड एनविल, एंड दिस इज़ द स्टिरअप. Its shape is like a buckle of a belt. These three bones are the smallest bones in the human body. They are present in the ear. These bones vibrate, and then when the vibrations continues from here and enters into the inner ear, over here there are some, you can see these semicircle portions. These are called semicircular canals, and these vibration then enters into semicircular canals, and from here this vibration then passes into this portion of the inner ear called cochlea. From here, from this cochlea, or in this portion, you can see yellow portion that is called the nerve. So this sensory organ or sense organ is also attached to the brain through a sensory nerve, and that nerve is called auditory nerve. This nerve will send message to the brain, and then brain identifies or gives the message to you that what type of sound you are hearing. मीन्स ये सारा जो आपका इंटरनल एयर का जो स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है कि किस तरह साउंड वेव्स जो हैं आउटर इन्वायरमेंट से, बाहर से आपके कान के अंदर वाले हिस्सों तक जाती हैं. कौन कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? जब वो वाइब्रेट करता है, एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, तो इसके साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी बोन्स जो हैं वो भी वाइब्रेट करती हैं. और आपको मालूम है जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है वो मूव करती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड. किसी चीज़ को अब हम ज़ोर से मूव करें बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो आवाज़ सी पैदा होती है. ये मूव करती हैं आगे इस हिस्से में इनर एयर में, और इनर एयर के कुछ पार्ट्स मूव करते हैं. इनके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो उसके साथ अटैच होती हैं ये नर्व्स. दीज आर द येलो पोर्शंस, दे आर द नर्व्स. और ये नर्व्स जो है मैसेज ले जाती हैं ब्रेन तक, और मैसेज आपको ब्रेन सेंड करता है मैसेज कि आइदर दिस साउंड इज़ द साउंड ऑफ अ बर्ड, और अ साउंड ऑफ अ गर्ल, और अ साउंड ऑफ अ म्यूज़िक साउंड, or a harsh sound or noise, whatever it is. So each and every sense organs, we have started from skin, and I told you before that under the skin cells there are nerve cells which send message to the brain. Likewise, we have seen in the picture of in the diagram of eye that retina is connected to the brain through optic nerve. In the same way, ear
The inner ear is connected to the brain through auditory nerve, which sends message to the brain, and then brain identifies what type of sound you have heard and how you have to react to this sound. So we have seen the three organs, skin, eye and ear. We have studied about the internal structures and how they perform this function, and how these sense organs are connected to the brain to receive information and then send the message. Brain sends the message back to them, and how they respond to this message. Ear continue to hear sound even when you are asleep. This is so that your body can react if it sense danger. हम सोए होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी जो है कान जो है वो सुनना बंद कर दें. आप सोए होते हो तब भी आपको आवाज़, अचानक सोए हो तो आपको आवाज़, शोर, एकदम से कुछ शोर की आवाज़ हो, बेल की आवाज़ आए तो आपको आवाज़ सुनाई देती है. दैट मीन्स द इंटरनल पार्ट्स आर वर्किंग, दे आर एट वर्क. इवन दो ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि एट वर्क रहता है. आई में स्टॉप मीन्स देखिए आपकी आइज़ जो हैं, जब आप सो रहे हो, आंखें बंद हैं, तो दे मे नॉट बी फंक्शनिंग, यानी कि उनके तो जाहिर सी बात है आपकी आईलिड बंद है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई इमेज बन रही है और ना ही आप कुछ उसको फोकस कर रहे हो, आप सोए हुए हो. लेकिन एयर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अगर आप सोए हो, अचानक से आवाज़ ऊंची सुनाई देती है, कोई शोर की आवाज़ आती है, तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हो.